आज हम पढ़ने जा रहे हैं functions of cilia and flagella. What are the different functions carried out by the cilia and flagella? Let's take them one by one. The first and most important function of the cilia and flagella are the is the locomotion. The cilia and flagella in various flagellated and ciliated organisms help in them in the locomotion. Locomotion, that is the ability of an organism to move from one place to the another place. तो जो पहली फंक्शन है सीलिया एंड फ्लैजिला, जो फ्लैजिलेटेड एंड सीलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें ये सीलिया एंड फ्लैजिला मदद करते हैं लोकोमोशन में. सच एज इन केस ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे, इन केस ऑफ प्रोटोजोनस की अगर हम कुछ प्रोटोजोनस की बात करेंगे, पैरामीशियम फॉर एग्जांपल, स्पॉन्जस की बात करें या पॉरीफेरास की बात करेंगे, these cilia and flagella help in their movement, that is the movement from one place to the another. Even the human sperm की जो मूवमेंट होती है, that is carried out by means of its tail, that is considered as a flagella. The second important function is that many this cilia and flagella help in many protozoans and some other aquatic animals में help करता है किस में, capturing of food. हाँ, तो to capture the food they need the cilia and the flagella. And the third important function of the cilia and flagella, they also help in obtaining the food from the aquatic medium, because they create a water current in the fluid medium. That water current is important for obtaining the food. And the fourth function of the cilia and flagella, इन केस ऑफ सिलेंट्रेट्स की बात करें तो सिलेंट्रेट्स में केविटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द गैस्ट्रोवेस्क्यूलर केविटी. उस गैस्ट्रोवेस्क्यूलर केविटी में फूड की सर्कुलेशन में मदद करते हैं हमें दीज फ्लैजिला. एंड द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज़ इन केस ऑफ फिफ्थ फंक्शन, इन केस ऑफ हायर एनिमल्स, जो द urine and gametes are drawn out from the urinary and genital tract with the help of the cilia. हायर एनिमल्स की अगर हम बात करें, सच एज द ह्यूमन बींग्स, जो यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक्ट से जो यूरिन एंड गैमीट्स आ रहे हैं, उनको ड्रा आउट करना, उनको बाहर निकालने में बहुत मदद करते हैं सीलिया, ओनली सीलिया. These cilia and flagella are also sensory in nature, that is they act as the sensory organs. They show the sensitivity to change in the light, change in the temperature, change in the contact. They can show the sensitivity towards the light के बारे में, लाइट को लाइट की सेंसिटिविटी शो, लाइट के अगेंस्ट सेंसिटिविटी शो कर सकते हैं, टेम्परेचर एंड कंटेक्ट के. एंड द एट्थ फंक्शन दैट सेवंथ फंक्शन, जो पॉरीफेरानस या जिनको हम स्पॉन्जेस कहते हैं, दे वन ऑफ द यूनिक फीचर, दैट इज दे पॉजेस द कैनाल सिस्टम. उस कैनाल सिस्टम को ऑपरेट करते हैं. that canal system is operated by the flagella present in their collar or conocytes. तो जो अंदर की तरफ जो फ्लैजिला को प्रेजेंट होते हैं कॉलर सेल्स में, या जिनको हम कोनोसाइट्स की कहते हैं, वही फ्लैजिला जो प्रेजेंट होते हैं कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स पे, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन टू ऑपरेट दोज specific organisms. And the next one is in case of higher animals की अगर हम बात करें, those are animals which have a well developed organ systems,
such as the human beings, the movement of female gametes in the oviducts, or we can say the movement of eggs in the oviduct or fallopian tube, is carried out by means of the cilia present in the fallopian tube or oviduct. क्या होता है कि एग जो होता है, एग इज ए नॉन मोटाइल, एग कैन नॉट मूव by its own, but due to the presence of the cilia present in the oviduct or fallopian tube, उनकी मूवमेंट इन एग्स की मूवमेंट करा देता है these cilia present in these in fallopian tube or oviduct. In case of animals, human beings की बात करेंगे, it is the cilia present in our respiratory tract में जो cilia होते हैं, these cilia help in the elimination of the dust particles. एलिमिनेशन रिमूव कर दे, बाहर निकाल देते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, कहाँ से, फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, mainly in case of the land animals such as the human beings. And in case of aquatic organisms, cilia create a current in water. किस लिए? For the renewal of the ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज करना और diffusion of oxygen supply of the oxygen to the particular aquatic or a diffusion of the carbon dioxide from the aquatic organism is carried out by means of the cilia, and due to the water current created by these cilia in these aquatic organisms. Now let's take a look to the functions of cilia and flagella. Again, the first important function, that is the locomotion, the second capturing of food, the third one obtaining food, and the fourth one circulation of food in case of the coelentrates. In case of the gastrovascular cavity of the coelentrates, drive out urine and gametes from the urinary and genital tract. Sensory in nature towards the light, temperature and contact. Operation of the canal system in sponges or porifera. Movement of eggs in the oviduct or जिसको हम कहते हैं fallopian tube. Elimination of the dust particles from the respiratory tract in case of land animals. Renewal of oxygen and diffusion of carbon dioxide from the aquatic organisms.